London opens, price starts to breathe. New York follows with heat underneath. Reading structure, steady and clean. ICT flow in every screen. Signal shift, momentum grows. Algorithm shows where it goes. VTrades, watch the charts ignite. Sniper entries hidden right. Funded profits rising bright. Building strength in every night. Follow flow, ignore the noise. Structured moves, intentional choice. Let the chart reveal the way. VTrades growing day by day. VTrades growing day by day. Institutional rhythm moves slow. Liquidity tells where price will go. Building accounts with patient plays. Consistency defines our day. Signal shift, momentum grows. Algorithm shows where it goes. Watch the charts ignite. Sniper entries hitting right. Funded profits rising bright. Building strength in every night. Follow flow, ignore the noise. Structured moves, intentional choice. Let the chart reveal the way. VTrades growing day by day. Trades growing day by day. Precise. Welcome to VTrades. Hello, how is everyone doing? Hope everyone is fine. Just give me a few seconds. So today is a bank holiday. We won't be risking a lot today. Just need to be really cautious and not risk anything stupid. We had real big gap opening towards the downside on NQ, mainly because of the news, um, Greenland issues. तो टैरिफ ट्रम्प भाई बिल्कुल ही बावले हो गए. So I think that it is not going to be filling it today at all on either of them. I think we are going to be dropping much lower. We have got opening range gap. I'll show you the annotation charts here. भाई कोशिश करेंगे हर्ष भाई ट्रेड लेने की, लेकिन आज क्योंकि हॉलिडे है, बैंक हॉलिडे, तो ऐसे दिनों पे मोस्टली कोशिश करनी चाहिए कि वी स्टे ऑफ साइड. तो वैसे भी इवैल्यूएशन है, नॉट रिस्किंग एनीथिंग स्पेसिफिक है, तो इजी सीन है. जनवरी है तो टेकिंग इट इजी.
trying to build some funded accounts that we can play moving on in the year. Yep. आप ट्रेड क्या करते हो हर्ष वैसे? So if we see the daily chart, I would like to read this wick or discount wick, sorry, on ES. This has already been swept on NQ. This was actually mentioned by, I'll actually mark this here. This hole is the suspension block, ICT suspension block. So we can study it like this, I think. And yep, similar on ES. So whenever we have got volume imbalance on both side of the fair value gap, वो suspension block बन जाता है. ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, and ये कर लेते हैं. Daily discount wick और similar here. We are 40 minutes away from market open. रिवर्स कर देते हैं. अब देखते हैं कि 5 मिनट 1 मिनट पे कुछ हमें ऐसा समझ में आ रहा है. Alright, it swept it, rallied to the consequent encroachment. Yeah. On ES, it is bouncing off from the first quadrant. So I'm pretty bearish, to be honest. We'll wait for the open though to see myself if I can place myself in a position. It is always good to know traders, so it will be really encouraging for me to, if you guys keep the chat section busy. Because as it is a holiday, we can, maybe talk a little more. So it is getting slapped from the consequent encroachment there, which is really good. Let's see the time. Equal highs. I think at the open they can run that, maybe. And that is why I'm still waiting for the open and not, pushing myself into any position. I will be trading 2 evaluation accounts with Tradify. Let me set the PNL correctly there. Nope, it doesn't want to work with me today. Alright, nothing to worry about.
All right. I will just put on my whole P&L section here after each position if we interact. गुड इवनिंग अलील भाई, इधर तो रात हो गई है मेरी जान, 12 बजने वाले हैं. That is how the 15-minute is looking. So I'm not expecting it to fill the gap today. If we look at the economic calendar, I think on Wednesday they might move the market, or maybe on Thursday we have got high impact news driver. So I think we are going to keep running towards the low. We have got the opening range gap low here on NQ that I was talking about. But because the markets are closed today in US, it's a bank holiday. The max I expected is to trade inside this 4-hour inefficiency. Let's look at ES. Yep, similar thing on ES. So yeah, take this inefficiency and maybe trade inside this. Take that liquidity, sorry, and trade inside this inefficiency. So let's see. All right, you want to take the screenshot? 1 minute दो. हाँ यार, कल लेकिन कल कुछ ऐसा न्यूज़ ड्राइवर नहीं है ना, तो वेंसडे को वो बोल रहा है ट्रम्प 8:30 बजे, और थर्सडे को फिर जीडीपी है, तो उसमें आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो लार्ज मूवमेंट. तब तक मेरे ख्याल से ये हिस्सा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होना चाहिए. तो लिख लो ये एनोटेशन, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है. We are 8 minutes away from market open. अगर नहीं ले पाए हो अदील तो मुझे बता देना, मैं दोबारा खोल दूंगा, मसला नहीं. इट्स जस्ट दैट वो बहुत मेसी चार्ट है, और जो लोग आईसीटी वगैरह ट्रेड नहीं करते ना, वो घबरा जाते हैं लिटरली. वो देख के मैं भी घबरा जाऊँ, टू बी ऑनेस्ट. इतनी सारी एनोटेशंस, वो कंफ्यूज भी होता है थोड़ा सा बंदा, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग. आज भी हमें बहुत बड़ा ओपनिंग रेंज गैप मिलेगा, 25,679. और जब भी हमारे पास ओपनिंग रेंज गैप्स बहुत बड़े होते हैं तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो नहीं उसमें ट्रेड करेगा, और अगर करेगा भी तो उस तक करे, और या तो लोअर क्वाड्रेंट तक करे. तो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. ये 679.25 है, ये 30 पे ले लेंगे. 25,679.25. Okay. Range gap, और ES पे है ये हमारे पास 6976. 6976.
तो बड़े गैप्स क्या होते हैं? बड़े गैप्स आप समझ लो कि 200 पॉइंट्स एन क्यू पे, 100 पॉइंट्स सी एस पे, ये बहुत बड़ी रेंज होती है फॉर ओपनिंग रेंज गैप्स। All right. So we are yep, सही लगा है। 5 minutes away. अगर कोई लंदन सेशन के बाद लॉन्ग था भी, तो मेरा ख्याल है कि उसको अपनी रीजनेबल रिट्रेसमेंट ले लेनी चाहिए थी, नोइंग ऑल दी सेंटिमेंट्स दैट आर गोइंग ऑन। ये देखो, इसने 50% रिट्रेसमेंट फिर भी दी है ऑफ द होल लंदन रेंज। तो जब भी अगर आप काउंटर ट्रेड करना पसंद करते हो, मैं भी थोड़ा सा ऐसा ही हूँ कि अगेंस्ट द ट्रेंड आप जाओ, तो उसमें अपनी एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल रखना बहुत ज़रूरी है। लाइक टारगेट 25%, दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि उतनी रिप्लेसमेंट आपको अक्सर मिल ही जाती है। वरना आप जो है वो पॉइंट वो 50% पे तो पूरा उतार लो पोजीशन। ऑलराइट, 4 minutes अवे। ये जो फिब लेवल्स हैं, ये बेसिकली डेली बेसी का लगा लूंगा, लेकिन दिस इज बेसिकली दी सस्पेंशन ब्लॉक। यूं थोड़ी सी बात कर लो, बात कर लो। इधर मैंने थोड़ी सी एनोटेशंस इसलिए लिख ली हैं क्योंकि ये एनोटेशंस मैं इस वक्त देख रहा हूँ। बाकी मेरे पास सेशन इंडिकेटर होते हैं जिसमें हर सेशन का जो किल जोन है उसकी एक ही लेवल लिक्विडिटीज होती हैं, हाइज और लोज। बाकी डेली हाइज एंड लोज होते हैं पिछले 3 दिनों के, और वीकली हाइज एंड लोज होते हैं फॉर दिस वीक एंड प्रीवियस वीक। चॉपी टुडे, या मैन, मच एक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप देखो, अगर मैं मिडनाइट ओपन रेंज या लंदन कर रहा होता तो उसमें मैं कुछ निकाल सकता था, टू बी ऑनेस्ट। ये मतलब मिडनाइट ओपन रेंज के की स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे की तरफ की आफ्टर दिस स्वीप ऑफ द मिडनाइट रेंज हाई, ये बहुत अच्छा सेटअप होता है आफ्टर 12:30। Right, this is how the 5 minute is looking. रिमेंबर कि इसने अभी ये स्वीप नहीं किया है ईएस ने, इट इज़ स्टिल ट्रेडिंग इनसाइड दिस डिस्काउंट विक, जबकि एनक्यू ने ये वाला डे का लो स्वीप कर दिया है। जब भी ट्रम्प ऑफिस में हो और आप यूएस मार्केट ट्रेड करते हो, तो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू नो कि क्या हो रहा है और क्या कर रहा है वो, क्योंकि बिल्कुल ही पता चल रहा होगा आपको कैसा नहीं है। Slowly going towards downside liquidity. Yes, boss. That is what we are expecting it to do. लेकिन we are just waiting on the market open, ताकि उसमें जो इसे बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करना है, अगर अगर करना है तो वो हम कर लें, उसमें हम स्टॉप आउट नहीं हो। और अगर ये कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ तो देखेंगे, अगर अपने आप को कुछ प्लेस कर सकते हुए तो सही है, वरना बैंक हॉलीडे है तो कोई गम नहीं है। इन शॉर्ट, सब्र करेंगे। और जनवरी है तो अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करो और वेट फॉर दी
right time to, save your capital, your mental capital, or execute. So just 1 minute away. Five seconds away. All right, market opens. हम देखते हैं कि इसको कहाँ करना है. पहला क्वाड्रेंट जो है ओपनिंग रेंज गैप का इज सिटिंग हेयर. तो अच्छा फिल हो जाएगा ये सारी इनएफिशिएंसी का. ये इक्वल हाइज भी ये स्वीप कर लेगा इफ इट रन्स टूवर्ड्स द हाई. तो फिर हम उधर से अपने आप को शायद शॉर्ट में कुछ प्लेस कर सकते हैं. लेकिन not really a significant opening. So could have placed ourselves when we saw that, but it's okay. All right, first minute opens bearishly. All right, that's good. Give us a premium. If market trades here, it will be used as a bullish inversion initially. See, they can also use just this to run short from him. If VS do not manage to refer this volume imbalance within this candle, we will be getting our first presented fair value gap here, and you're about to sweep lows for the day. A very small gap. I won't be considering it a first presented fair value gap.
I'll see if it provides me any such information where it shows me that it might take those equal highs. Yeah, that can be a good range, around 70 to 80 points. But it's really bearish, man. And if you look at the news and the sentiment around the market, uh, it's a bit where U US equities and US securities can take a serious hit, especially today and tomorrow. So we'll be needing some proper confirmation to long it from here. Maybe something like SMT divergence where NQ makes lower low for the day, and maybe ES just bounces off after referring this quadrant again on the wick. But until then, uh, I won't be longing it. Alright, NQ makes lower low. I would like this to be the first presented fair value gap. Up till now we are bearishers, but let's see. Looking for more information. But guys, really do not expect, much volatility here, uh, or any sort of proper price action because it's a bank holiday. As you can see that regular trading hours, there is no price action. And morning sessions can be tough. Market will be closing at 1 p.m. as well. Alright, NQ never swept the low there. अब सही है भाई. इधर ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू जब दे देता ना तो मैं लॉन्ग कर भी देता थोड़ी सी रेंज के लिए. मे बी ये इनएफिशिएंसी, ये वाली, ये भी अच्छी खासी वो है पॉइंट्स. यार वॉलेटिलिटी तो अभी भी नहीं है, मतलब ये ऐसी ओपन थोड़ी नहीं होती. हम लोग रोज ओपन करते हैं, आप देखना पिछली स्ट्रीम. मैं इसलिए तो रुका हुआ था कि वो ओपन की जो वॉलेटिलिटी है वो ये इक्वल हाइज लेगी. तो वहां तक तो मार्केट पहुंची ही नहीं, और जिस तरीके से गिर रही है तो स्पीड जो है मजेदार नहीं है टू बी ऑनेस्ट. लाइक और मैं फोर्स नहीं करना चाह रहा कुछ भी अपने ऊपर ये मार्केट पे. आप लोगों के क्या प्लान है इस महीने के लिए?
इफ़ यू गाइज आर रिस्क ऑन, तो कौन से दिन आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हो? आई थिंक कि अभी जनवरी में इट्स बेटर टू वेट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, और स्पेशली जो चल रही है पॉलिटिकल सिचुएशन एंड सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन, वो काफ़ी टफ है। आप ऐसे यूज़ करते हो ब्रो? ब्रो मैं सिर्फ आईसीटी यूज़ करता हूँ, एंड आईसीटी फ्रॉम आईसीटी ओनली। मतलब मैंने किसी और की वीडियोस नहीं देखी हैं उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और फिर बैक टेस्ट करता हूँ वो कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हुए, और फिर अपने मॉडल में जो चीज़ें ऐड करनी होती हैं वो करता हूँ। तो मेनली जो है वो लाइव स्ट्रीम पे मैं टारगेट कर रहा हूँ 3 मॉडल्स। एक जो है वो ओपनिंग रेंज गैप मॉडल होता है, ये जो हमने ओपनिंग रेंज गैप बनाया है, इसका फिल होता है 50% तक। उसमें वेट करना होता है फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप का वो आ जाए, तो फिर आपको ऑब्वियसली देखना होता है कि अपोजिट साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई है या नहीं हुई है, और फिर आप उस डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो। दूसरा जो है वो ऑब्वियसली 10 AM सिल्वर बुलेट है। और तीसरा लंच प्रोफाइल है, अगर लंच प्रोफाइल जो है वो 10:50 और 11:10 वाले मैक्रो में शुरू हो जाती है। तो ये सीन है। We'll start from 20th Jan. Yes, it's a smarter move. मैंने देखा है कि जितने भी कॉशियस स्टूडेंट्स हैं वो यही कर रहे हैं, विच इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि अगर आपको पता है कि कौन से दिन पे आपको रिस्क ऑफ रहना है एंड यू स्टिक टू इट, तो फिर नथिंग कैन स्टॉप यू टू बी प्रॉफिटेबल। क्योंकि मार्केट से पैसा निकालना मसला नहीं है, मसला होता है कि आप उसे बचाते नहीं हैं। सो प्रिटी चीप प्राइस एक्शन, इसमें क्या ही बंदा एग्जीक्यूट करे, इतना स्लो थोड़ी नहीं होती एनक्यू। और ओपनिंग रेंज ऐसी है तो पता नहीं क्या ही होगा, मतलब लंच में और ओपनिंग उसमें। लेकिन खैर है, देखते हैं। तो अगर हमें कंटिन्यूएशन लेनी है तो ये डेली किसी यहाँ पे बंद हो रही है, वो सस्पेंशन ब्लॉक। और यस, इसकी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक कर सकता है मेरे ख्याल से ओपनिंग रेंज में तो। जीसी देखो, यार जीसी देख लेते हैं। ऑलराइट। हाँ वो, क्योंकि देखो ना, अब ये समझने की बहुत ज़रूरत है अदील, अगर तुम हो तो इसलिए मैं बोल रहा था कि बेसिक इकोनॉमिक्स और थोड़ी बहुत मतलब पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें ना समझने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली ये ट्रम्प जब तक ऑफिस में है। अब जो मूवमेंट हो रही है ना, ये फिर भी पसंद आ रही है मुझे, थोड़ा सा तेज़ है ये। खैर, तो क्योंकि देख रहे हो कि नेस्डेक क्यों, नेस्डेक गिरी है, और गोल्ड जो है वो हमेशा यूएस डॉलर के अगेंस्ट एक हेज है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है, तो वो बड़ा है। मैंने लिटरली लोगों को यहाँ पे वो दिलवाया है गोल्ड। और कहाँ है, दिल्ली पे जाना पड़ेगा। 2022। हाँ, तो 22 के मैंने सितंबर में लोगों को बोला कि लेना शुरू कर दो, 1800 पे था। और ये तो कुछ भी नहीं, सिल्वर पे ज़्यादा बेहतर हुआ है। क्या है सिल्वर का भी, खैर ट्रेडो एट के इस पे हैं हम, तो खैर। अच्छा, इस पे कुछ चाहिए तो मैं देख के बता देता हूँ। 15 मिनट है ये।
तो लंदन स्वीप हुआ हुआ है ऑलरेडी, इस की इनएफिशिएंसी में बैठा हुआ है ये। एशियन भी पीछे से स्वीप हुआ हुआ है और मिडनाइट ओपन रेंज भी स्वीप हुई हुई है। तो रन करने के लिए मेरे ख्याल से रेडी है ये। इसको देखो, इस पे बैठता है या ये लो लेता है, उसके बाद कंटिन्यूएशन देखो मेरे ख्याल से ऊपर तक, ऊपर की तरफ। गैप फिल किस पे? गोल्ड पे? नहीं ब्रो, मेरा नहीं ख्याल कि मंडे या ट्यूसडे को गैप फिल खेलना, ये इस न्यूज़ के बाद और इस सारी सेंटिमेंट के बाद। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसके भी एनक्यू पे भी गैप फिल नहीं खेले कोई मंडे को, क्योंकि मंडे को वैसे भी नहीं करता वो इतने बड़े गैप बनाने के बाद। और जिस तरीके का सेंटिमेंट है मेरा, लाइक बहुत प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए होगी आज के लिए और कल के लिए। नीचे लो लेकर ही जाएगा गोल्ड। ये वाला लो ले सकता है ब्रो, ज़्यादा ज़्यादा ये ले सकता है। अभी ये जो फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है उसको भी रीटेस्ट से नहीं किया है। तो सिंस दी ओपन आप ये बोल सकते हो कि हाँ, इट्स टेकिंग अ स्लैप। 5 मिनट देखते हैं। 5 मिनट भी बिसी में बैठा हुआ है। तो अब्दुल्ला नाम है आपका? जो भी नाम है भाई, मुझे आप अगेंस्ट द ट्रेंड खेलने वाले ट्रेडर लगते हो, और मैं भी मोस्टली यही हूँ। लेकिन बी रियली कॉशियस टू शॉर्ट यहाँ से गोल्ड और टू लॉन्ग एन क्यू यहाँ से, एंड टू टारगेट इधर गैप फिल, क्योंकि बहुत ज़्यादा है भाई पॉइंट। और गोल्ड का तो आपको पता ही है क्या है। और फिर ये देखो ना कि इसने फ्राइडे को किया क्या है, फ्राइडे को इसने प्रॉपर स्वीप की है लिक्विडिटी। सो मे बी ऑल दिस वाज अ सेटअप फॉर दिस। 33 पॉइंट्स हैं इस पे। अब मैं गोल्ड ट्रेड करता नहीं हूँ तो मुझे इसके पॉइंट्स वगैरह का इतना अंदाज़ा नहीं है कि कितना बड़ा है इसकी रेगुलर वॉलेटिलिटी से। लेकिन मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि इतना अगेंस्ट द ट्रेंड विदाउट एनी प्रॉपर न्यूज़ और एनीथिंग इंटरफेयरिंग टू ब्रेक दैट ट्रेंड थोड़ा सा मुश्किल है। एन क्यू एस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और अगर कर भी रहे हो तो मिनिमल टारगेट रखो, मतलब अपना अपना ट्रेड उतार लो, और भले बाइस तो राइट करो और देखो मार्केट पहुंचती है नहीं पहुंचती, कितने टाइम में पहुंचती है। बहुत है ना भाई, हाँ वो लग ही रहा है बहुत है, क्योंकि आप वैसी ही रेंज देखो। तो ये सीन है मेरा भाई। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। एंड ओपन होते के साथ 30-40 पॉइंट अप साइड मूव किया। हाँ, अब ये जो मूव है ना ये अच्छा लग रहा है मुझे एन क्यू एस पे। देखते हैं। अबे यार क्या, अरे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दे देता है हमें। अच्छा सा, तो क्या पता कुछ खेल लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप तो आ रहा है मेरे ख्याल से। इन्वर्ट भी हो सकता है ये, पहले अभी के लिए ये लेते हैं।
All right. Okay. Pushed higher without retesting the gap there. अगर ये 930 की ओपन प्राइस तक पहुंच जाता है जो कि यहाँ पे है विदाउट रीटेस्टिंग एनी ऑफ दिस और एनी ऑफ द ब्रेकर है तो फिर जाहिर है लॉन्ग का जो ट्रेड है वो हमारा इधर मिस हो जाएगा या फिर इनवैलिडेटेड हो जाएगा. अब ये वाला ब्रेकर लिया जा सकता है एंट्री. तो मैं साइज कम करके थोड़ी सी अपनी वो कर लेता हूँ एडजस्टमेंट. अगर ट्रेड मिल सकता है यहाँ से तो मिल जाएगा. आई थिंक वी मिस्ड इट though. ये है ना यार मैंने क्यों नहीं पढ़ा. ओके नहीं सॉरी गाइस. ओके वो तो सही है भाई लेकिन मेरी ये एंट्री मॉडल जो है वो फेयर वैल्यू गैप है. मुझे वो देगा तभी तो मैं एंट्री लूंगा ना यार. गिव कंफर्मेशन ऑन द रेड कैंडल. रेड कैंडल है क्या मेरे भाई. ब्लैक या ग्रीन कैंडल है हमारे पास चार्ट पे. मुझे तो लग रहा है दिस इज जस्ट टू allow ES to reach this. That will allow NQ maybe to take that high or uh, maybe 930 open price. क्योंकि खैर ये तो बंदी है दूसरे स्टॉक्स लेकिन लेट्स सी. यस ब्रो आई वाज स्कैर्ड. कौन सी ब्लैक वन ब्रो. टाइम से चलो टाइम. 941 942 943. यार ये क्यों करे जा रहा हूँ मैं. Taking a short here, mainly because of the annotation chart. Looks really good to me. ES is retesting the new week opening gap low here, while NQ is retesting the consequent encroachment.
So we'll give it a try. Yep. Uh-huh. We are offside. Risk is managed. All good. Lost 180 there, lower than the usual risk. So all good. I want retest of this fair value gap at least. It is moving good now, to be honest. Like this move. Good volatility. Sorry. Yeah. No, liquidity is sitting here, to be honest. Proper liquidity. 3 equal highs. But that one is high. Wait, that one is lower than this one. So it makes it a proper liquidity, to be honest, on ES as well. This one is lower than all of those. Made a new high for the opening range. किसी चीज का रीटेस्ट ही नहीं दे रहा भाई वो, ना ये फेयर वैल्यू गैप भरा ना ये सब भरा. No from sell side. Yeah, it took the sell side liquidity. Now it is running for the buy side. अब बाय साइड इनएफिशिएंसी अगर आप बोल रहे हो तो कौन से टाइम फ्रेम पे बोल रहे हो वो देख सकते हैं. Equal highs are the highest probable, you know, liquidity. जो चीज़ भी स्मूथ आपको दिखेगी ना वो रिटेल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, तो वो मोस्टली टारगेट की जाती है. कितने बनाए हैं आपने? Maybe at least 9:30 open price retest.
The range. $3,000 just by scalping. Good on you, boss. Good on you. All right, 10 o'clock. Dipped into very nice inefficiency there. Took the buy side as well. और आप एनक्यू ट्रेड कर रहे हो या गोल्ड ट्रेड कर रहे हो? एनक्यू कर रहे हो ना? जिस तरीके से इसने इनएफिशिएंसीज नहीं भरी हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि ये सारी इनएफिशिएंसीज इन्वर्ट करने के लिए छोड़ रहा है. ओके, गुड टू नो बॉस. हाफ एन आवर में नीचे से लिक्विडिटी लेकर अब ऊपर की एफिशिएंसी या लिक्विडिटी की तरफ जा रही. जी भाई. तो इनएफिशिएंसी ये गैप्स होते हैं और लिक्विडिटी हाइज और लोज होते हैं. तो इट मेड अ लोअर लो फॉर द डे. हमारा पहला जो ओवरनाइट लो था वो ये था. उधर से इट rallied higher. We could have entered here. अगर इसका इस कैंडल पे थोड़ा सा प्रॉपर रीटेस्ट मिल जाता है इस ब्रेकर का या इधर किसी फेयर वैल्यू गैप का, नहीं मिला, विच इज़ ओके बिकॉज रिपीट होता है ये सब. हम हर दिन बैठते हैं यहाँ पे, तो मसले की बात नहीं है.
प्रॉपर वन साइडेड रन भाई, प्रॉपर वन साइडेड रन। हम ऐसे रन्स का हिस्सा नहीं होते भाइयों। और ऐसी कंडीशंस का भी नहीं होते। इफ़ वी हैव मिस्ड इट वी हैव मिस्ड इट, इफ़ वी हैव गॉट द एंट्री इन सम वे और द अदर। बट ऐसी मार्केट कंडीशंस जो हैं वो बहुत अजीब सी होती हैं टू बी ऑनेस्ट, जिसमें किसी भी तरीके का आपको रीटेस्ट नहीं मिले। और 9:46 से ये शुरू हुआ है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। इसमें सिर्फ जो आपको डाउन क्लोज कैंडल मिलेंगी वो 3 मिलेंगी। तो if you are telling me you were able to get the entry and were sure about it, good boss. Let me know the entry model you used, please. क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप के बाद तो घुस सकता है बंदा, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप के बाद अगर ये एक अच्छा है, ये बहुत अच्छा है जिसको हमने वो किया, शॉर्ट किया यहीं से। ये अगर मैं लॉन्ग लेता तो बहुत अच्छी एंट्री थी। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसी को हम फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप की तरह रीड कर रहे थे, और इसी को इसने इन्वर्ट किया और हमें स्टॉप आउट किया रादर देन वो करना। लेकिन उसका मैंने बताया था कि मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि उस वक्त मार्केट जो है वो ओपनिंग रेंज कैप के 19 दिसंबर वाली ओपनिंग रेंज कैप के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट थी। तो हमारा ओपनिंग रेंज गैप का जो फर्स्ट वो है क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट, दैट इज सिटिंग एट 388.25, विच इज़ क्लोजिंग अराउंड दिस इनएफिशिएंसी, जो हम मार्केट के ओपन पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो इनिशियली वहाँ पे हमें रन दे दे, और इसीलिए हम जो है इस मूव में शॉर्ट नहीं गए थे। तो अगर ये, क्योंकि ईएस ने अभी तक नहीं लिया है ये हाई और एनक्यू ने भी नहीं लिया है, एक और इक्वल हाई बना दिया है, तो हम लोग देख सकते हैं एक डिसेंट एंट्री के लिए। इस फेयर वैल्यू गैप में देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करती है मार्केट। तो वही तो देखो ना, आप प्रॉपर प्रीमियम में खरीद रहोगे। कंफर्मेशन चाहिए होगी, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लगा रहा हूँ अभी। अगर इसको हम ब्रेकर की तरह भी रीड कर लेते हैं इस रेंज को, तो सही है, हाँ यही मिल सकता है। तो ये 5 कॉन्ट्रैक्ट बहुत है। थोड़ा सा रिस्पेक्ट बनना पड़ेगा। एक्सपेक्ट, वेट हम करेंगे, मैंने ये प्लेस नहीं किया अभी। बॉस आप खेल रहे हो ना, बना तो रहे हो गोल पे, मेरे देखने की क्या ज़रूरत है। ट्रेड लेने वाला हूँ यार, देखता हूँ बाद में। और मैं यही रेकमेंड करूँगा, मुझे आपका एक्सपीरियंस लेवल वगैरह नहीं पता, लेकिन मैं रेकमेंड जो करूँगा वो यही करूँगा कि बंदा जो है वो एक ही मार्केट देखा करे, क्योंकि एक मार्केट को सही से पढ़ने के लिए भी आपको इतनी स्टडी और इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। अगर आप कोई और काम करते हो तो मुश्किल है कि आप 2-3 मार्केट्स लेके चलो। मैं प्लेस करूँगा इधर, लेट्स सी।
All right, taking a hit. बहुत महंगा खरीदा है यार. If I get stopped out here, I won't be trading. Yeah, that's for sure. वैसे मैं 3 रिस्क अलाउ करता हूँ अपने आप को, मतलब 3 स्ट्रेट लॉसेस फॉर द सेशन टू बी क्लोज्ड ऑफ. लेकिन आज का दिन वर्थ इट नहीं लग रहा टू बी ऑनेस्ट अभी तक. तो बैठेंगे लंच तक, लंच के स्टार्ट तक, तो देखेंगे अगर कुछ मिला. लेकिन इस स्टॉप लॉस के बाद मैं थोड़ा सा पीछे हट जाऊंगा एटलीस्ट बटन दबाने से. ये 5 मिनट इनएफिशिएंसी है. वी आर नॉट प्लेस्ड नाइसली देयर. ये 15 मिनट है, ये 3 मिनट में बंद हो रही है, तो उसके बाद ये रीटेस्ट करके कंटिन्यू कर सकता है. तो नॉट अ गुड एंट्री टू बी ऑनेस्ट. शुड हैव वेटेड. यहाँ पे वेट करने की सज़ा मिली, यहाँ पे नहीं वेट करने की सज़ा मिलेगी. दैट इज ट्रेडिंग फॉर यू. And Mondays are the worst days for me to be honest. Like मैं अपना TradeZella देखता हूँ, अपने stats देखता हूँ. Mondays और Tuesdays तो only if I did not have those days in my trading career मेरी profitability बहुत बेहतर होती. Not looking strong. On this candle to at least respect that small inefficiency bullishly, close above that. The next candle should initially drop a little lower, maybe retest this volume imbalance again and continue higher if we are on side. If not, then it can dip much lower, maybe retest of the 930 open price on ES and maybe on NQ as well. I don't do that. I usually stick to my, you know, stop losses and risk management. Sometimes I do, लेकिन बार बार बाइस फ्लिप करने से वो उसने भी बहुत नुकसान दिए हैं मुझे. आप लोग ट्रेड कितने दिनों से, कितने सालों से कर रहे हो ये बताओ ना. जो आप लोगों की बातें लग रही है ना, वो मैं क्या बोलना नहीं चाह रहा बस. विदाउट नोइंग एनीथिंग.
जाना हुआ जाएगा, नहीं जाना हुआ रिस्क मैनेजर मेरे भाई. Just follow your rules. That's the only thing in your control. Oh, and keep getting better. Like पिछले ट्रेड से जो मुझे सीखने को है वो ये है कि भाई पढ़ो. Like proper ये तो बाय एंट्री मिली है यहाँ पे. And look, get the information which the market is giving you rather than जो मैंने बायस बनाया हुआ है उसको वो करें. क्योंकि अगर मैं ये इक्वल हाइज मेरे दिमाग में होते जो इनिशियली टारगेट था एट दी ओपन वो अगर होता है इस वक्त तक तो क्या पता मैं शॉर्ट बायस इतना इन्फोर्स नहीं करता. तो दिस इज़ हाउ दिस गेम इज़ अबाउट. लास्ट 2 days. Good on you, boss. Good on you. Two years. That's nice. 2 साल से आप गोल्ड ही ट्रेड कर रहे हो सिर्फ. And what do you use to read the price action? Retesting that favor, you have to run lower, I believe. You see, NQ never wicked that much, and MNQ wicked until 305. So sometimes you will see that kind of difference in MNQ and NQ. And what I have noticed is MNQ usually wicks a lot during the morning session, like obviously as compared to NQ. Right, 15 मिनट भी है यहाँ पे. वही बात है ना कि इतनी गलत आपकी एंट्री है कि आप अपने बायस से भी स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको वो स्टॉप आउट कर देगी और एंड इवन देन इट कैन लाइक योर ट्रेड कैन प्ले आउट. ऐसी पोजीशन जो होती है ना उस पे सिर्फ बंदा अफसोस ही कर सकता है. क्योंकि 9:30 का रीटेस्ट जो है वो फेयर वैल्यू होगा काफ़ी अच्छा.
Yep, here we go. 2 stop losses down almost 400 for the day on both these evaluations, which is okay. It's still got one risk element, but going to see if we get anything worthy enough. About to retest 930. Eight minutes away from 1030. ES wants to dip a bit much lower. बीस पॉइंट की रहेंगे यहाँ से. ये भी टाइट होगा थोड़ा सा. Want this to be inverted bullishly. Got this volume imbalance. Might be to retest that. I wanted to close above this high of the fair value gap. All right. Going again long. Might add one more on some proper confirmation.
But if we get stopped out here, this will be last trade for the session. With 0% win rate. Part of the process, boys. Part of the process. Clicking one off there. Taking one off here. Just this way. See if we can add one. This needs to be inverted as well. Maybe not in this candle. But moving on. Let's look at 15-minute. It's always really important to keep toggling into different, time frame. तो जी अब्दुल्ला भाई, आप क्या यूज करते हो टू रीड द प्राइस? कोई इंडिकेटर है? और आप 2 साल से गोल्ड ही ट्रेड कर रहे हो सिर्फ? और अगर ऐसा है तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप जो है वो करो ना, और मार्केट चेंज करो। मतलब मेरी एडवाइस यही होगी। मैं 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन एनक्यू जो है वो पिछले शायद 1.5 साल से कर रहा हूँ। और जब से मैं एक मार्केट से टिका हूँ, तब से ही प्रॉफिटेबिलिटी आई है, एक एक मार्केट से, एक स्ट्रेटजी से। तो ये आप बहुत अच्छे टाइम में, आप 2 साल पहले आए हो ना, तो आपने सिर्फ बुलिश मार्केट देखी है मेरी जान। लेकिन अच्छी बात है, 2023 से भाग रहा है, 2022 से भाग रहा है खैर सारी चीज़ें। आ, लेकिन मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा, आप जो है ना, वो अगर आपको प्रिपेयर होना है दूसरी मार्केट प्रोफाइल्स के लिए भी, तो बैक टेस्ट करो आप थोड़ा सा। 2000, मैं बोलूँगा 19 से 21 तक का डेटा गोल्ड पे। आई एम नॉट रियली श्योर, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा। एंड आई ट्रेड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई इस पे आई वोंट कमेंट। मतलब आप क्या, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या? आई हैव एडेड देयर।
risking a little high to be honest, 270 here at the moment, but I'll trade my stop if it allows me, obviously. So पहला लेवल कहाँ है? 82 80 मैं थोड़ा सा रिस्क ट्रेल करूँगा अपना इधर तो। इसको मैं एज अ ब्रेकर लेवल पढ़ रहा हूँ। हाँ भाई, लेकिन कभी तो प्रोफाइल चेंज होगी ना। मतलब आपको लग रहा है ये भागता रहेगा ऊपर की तरफ? सही है, अगले 3-4 साल भी बुलिश हैं और लॉन्गर टर्म एक बुलिश एसेट है बिकॉज ऑफ द व्हाट यूएस डॉलर इज गोइंग थ्रू एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी। लेकिन कभी ना कभी तो डायनामिक्स चेंज होंगे। भाई आपका अगर पैसा बन रहा है तो आप क्यों करोगे? आपका कितने पे आउट आपके हुए, मतलब व्हाट वाज योर लास्ट ईयर्स रिजल्ट? और कौन सी आप टॉप फर्म्स करते हो, अपना पर्सनल अकाउंट खेलते हो, क्या सीन है? ऑलराइट, स्विंग ट्रेड, सो आई बिलीव आप अपना पर्सनल अकाउंट खेलते हो गोल्ड पे। सीएफडीज या फ्यूचर्स? सीएफडीज ही खेलते हो अगर अगर पाकिस्तान से हो। 4,000 से अभी तक एक बाय चल रही है। इतनी? पर्सनल अकाउंट इज बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। लेकिन ऑब्वियसली कैपिटल बिल्ड करो डिसेंट सा प्रॉप फर्म के थ्रू। गुड ब्रो, गुड गुड गुड, keep it up. That was inverted really beautifully. That was inverted really beautifully. Oh, you're from Dubai. All right, that's good. Good to know you, bro. Thanks for joining the channel. यार ये सबसे बेस्ट है ना, निकालते रहो ना, क्यों आपने अगर आपका सीड अमाउंट वापस बन गया ना 100%, तो बस अपना सीड अमाउंट अंदर छोड़ो और उसे चलाते रहो, और फिर से अगर कर दिया तो फिर वो कर लो। जब मैं अपना पर्सनल अकाउंट क्रिप्टो पे करता था, अब तो मैं एम कर रहा हूँ इस पे आराम से 25,000 का वो बनाऊँ अकाउंट यूएसडी का, और फिर वो करूँ एन क्यू और एम एन क्यू पे।
लेकिन उस वक्त मेरे साथ मसला जो होता था वो यही होता था कि मैं उसको मल्टीप्लाई 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 और फिर वो लेवरेज और अकाउंट वो साइज भी बढ़ जाता है, और ऑब्वियसली विदाउट ब्रेक्स तो मैं ब्लो कर देता। अगर बंदे की मेंटेलिटी ये है ना कि ही कैन कैश आउट, तो उसके लिए ग्रोथ जो है और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी आसान हो जाती है। अभी ये इस लेवल पे भी रिएक्ट कर रहा है, एंड नोइंग दैट इट इज़ अ हॉलीडे, क्या करना चाहिए? वेट करते हैं। मुझे पर याद है, मतलब एक हफ्ते भी नहीं, 4 दिन में मैं उस वक्त नया नया आया था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एज अ स्टूडेंट, तो मैं कुछ करता था 75-80 घंटे काम, और नाइट शिफ्ट करता था एक हॉस्टल पे। तो वहाँ पे काम करते हुए ही मैं डे ट्रेडिंग करता था क्रिप्टो की। तो कोई $200 को मैंने 5,500 किया, और उस 5,500 को 4 रातों में, और फिर वो मैंने गवाए शायद सिर्फ 3 ट्रेडों में या 4 ट्रेडों में, और जो मैंने बनाया था वो ऑब्वियसली क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ और डे ट्रेडर हूँ, कोई बनाया होगा आराम से कोई 30-40 ट्रेड। तो और वो कोई दूसरा साल था मेरा ट्रेडिंग का। तो शुरू में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और बैंक हॉलीडे के दिन ऐसी चीज़ें होती हैं जिस तरीके का आप देख रहे हो अभी प्राइस एक्शन। लेकिन मसला नहीं है, इनएफिशिएंसी में ही आके अच्छा सा रिएक्शन मिला है। इफ़ इट मैनेजेस टू क्लोज बुलिशली हमारे फेवर में ही है ट्रेड। ऐड कर सकता था वहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे। अब्दुल्ला भाई आपको पता चलेगा, मैं आपका आपकी वाइब और आपका माइंडसेट वगैरह ख़राब नहीं करना चाह रहा, लेकिन लोगों ने मुश्किल नहीं किया हुआ बस। ये जो हमारी कंडीशनिंग है अराउंड लाइफ और दूसरी चीज़ें स्पेशली अराउंड मनी, वो चीज़ मुश्किल बनाती है। तो क्लोज वाज रियली शिटी। आई थिंक इट विल रन आवर स्टॉप अगेन। इसको थोड़ा सा इतना मार्जिन दे देता हूँ। स्टॉप तो थोड़ा 250 हो गया है, ज़्यादा है लेकिन सही है। थर्ड ट्रेड ऑफ द डे ब्रो। ब्रो कीप योर प्रॉफिट आउट एज सून एज पॉसिबल। या 12 मिनट्स एंड 10:50 मैक्रो। ये इसने भी अच्छा रिएक्ट किया है वापस से 9:30 ओपन प्राइस तक अभी तक। लेट्स सी हाउ इट रिएक्ट्स इन दिस 1 मिनट से भी। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ।
Sounds pretty simple, right? Yet only the 2% or 3% survive until the next 10 years in this business, boss. That's true. If अगर आपका माइंडसेट सर्वाइवल की तरफ है ना और आपकी रिस्क मैनेजमेंट उसके इक्विवेलेंट है तो फिर आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। लेकिन मसला वही है जो आप बोल रहे हो सारा। लेकिन या ह्यूमन नेचर ही मुश्किल बनाती है चीज़ों को। ओके, बॉट वन मोर। और फिर हम ये करेंगे कि स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। और स्टॉप लॉस हुए तो स्टॉप लॉस हुआ भैया जी। इधर दो उतार लेंगे बस। मस्त मलंगा। ठीक है ना? नॉट सिंपल, जस्ट फाइट विद योर साइकोलॉजी। नॉट फाइट यार, उसको समझो, उसको एक्सेप्ट करो, अपने आप अपने नेचर को समझो। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप ग्रीडी हो या आप ब्रेक नहीं लेते, जैसे मुझे पता है कि मैं ब्रेक नहीं लेता, तो अगर मेरे 2-3 पे आउट हो गए हैं और मैं अच्छी सी ब्रेक एक डिजर्व कर सकता हूँ तो ले लूँ ना यार ब्रेक। मतलब अगर दूसरा काम होता, कोई जॉब या नौकरी होती तो मैं हंसी खुशी जाता, अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाता या अच्छी सैलरी आ जाती तो। लेकिन इसमें क्यों नहीं करते हम वो? क्यों लगे रहते हैं और करने पे? तो ब्रेक बहुत ज़रूरी है। जी भाई, तो ज़रूरी है कि आप ये समझो कि इंसान हो, ये इमोशंस भी हैं, साइकोलॉजी भी है। उसको अंडरस्टैंड करो रादर देन फाइटिंग इट। नहीं, कुछ लोगों की ऐसी जॉब भी होती है जो कमीशन बेस्ड होती है, तो अगर उनका प्रॉफिट बन जाता है दे टेक सिक लीव ऑफ। समझ रहे हो? ये सिर्फ इस चीज में है क्योंकि आपके बेडरूम से बैठे हुए और इतनी ग्लैमराइज कर रही है ये चीज। स्पेशली जो मार्केटिंग है इस चीज की कि आओ और 25 दिन में पैसा डबल। हाँ वही बात है, लेकिन यार बात एक और ये है कि भाई ये जो गेम आप खेल रहे हो ये पहले सबके पास एक्सेस नहीं होती थी, ठीक है ना? तो आप, और स्पेशली मुझे नहीं लगता कि, मतलब मेरे पास नहीं था एटलीस्ट फैमिली फ्रेंड्स में या किसी में कोई प्रोफेशनल ट्रेडर टू गाइड मी या वो सारी चीज़ें। तो मैंने सारी चीज़ें जो सीखी हैं वो अपने पिछले 5 साल के करियर या 6 साल के करियर में ट्रायल एंड एरर के बेस पे सीखी हैं। और हर किसी का मोस्टली जो जर्नी है वो इसी तरीके का है, भले बंदा यूएस में हो, कनाडा में हो, जो भी रिटेल ट्रेडर है उनका ऐसा ही है, वो है सिमिलर। तो इसको आप फोर्स नहीं कर सकते, वो जर्नी आपको लेनी है। और हर जर्नी का मतलब जो फेजेस हैं उसमें अलग लेसन्स हैं, और उन लेसन्स को आप सीखो। उसके लिहाज से आप अपने रूल्स बनाओ कि आप ज़्यादा देर सरवाइव कर सको। जब तक आप ज़्यादा देर सरवाइव कर सकोगे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स आएंगे और आप उस पर कैपिटलाइज कर सको।
क्योंकि मेरे साथ तो यही अफसोस होता है मुझे कि मैं इतनी तेज स्पीड पे भागने को फोकस करता हूँ हमेशा कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो उस बड़े सैंपल साइज पे अपने प्रॉफिट्स ही नहीं दिखा पाती। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग है, ये गैम्बलिंग नहीं है। आपको ये देखना है कि अगले 100 ट्रेड पे, अगले 1000 ट्रेड पे, 500 ट्रेड्स पे क्या रिजल्ट आएगा। एनक्यू इज रिजेक्टिंग फ्रॉम अपसाइड। कौन सी वाली एनक्यू देख रहे हो मेरे भाई? आपके पास 10 मिनट डिलेड डाटा है आदिल भाई, बताया था ना मैंने आपको वीकेंड पे। तो आप शायद 10 मिनट पहले ना 946, 936 ये देख रहे हो। हाँ, ये वाला वो देख रहे हो, ड्रॉप देख रहे हो आप। ओ सामा ब्रो, हाउ यू डूइंग? लवली। Although I'm pretty sure you wouldn't have got shit. That was all in Urdu. Naughty, naughty. Are you in Melbourne as well? जी अदिल भाई समझे 10 मिनट डिलेड डेटा का सीन। तो याद है मैंने ये बताया था कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम सिर्फ अभी कुछ ट्रेड वगैरह नहीं ले रहे और सिर्फ सीखने के उससे ना, क्योंकि तुम उस प्राइस एक्शन को होते हुए तुम 2 बार देखोगे। तो तुम बेसिकली सेम ही प्राइस एक्शन को 2 बार टेप रीड कर रहे हो। तो अभी तुम देखोगे कि यहाँ से तुमने ड्रॉप देखा, लेकिन फिर तुम देखोगे कि यहाँ पे भी मार्केट वापस चढ़ के गई। तो समझ रहे हो, एक्सपीरियंस बिल्ड होगा और वो जो रश करने वाली आदत है मेरी और तुम्हारी, वो कम होगी। बेस्टम बेस्ट बॉस, बेस्टम बेस्ट। हाँ, पीवर ट्रेड करो, उसके लिहाज से ये सेशन लिक्विडिटीज वगैरह समझने की कोशिश करो। अब देखो कि ये जो है ये इकोनॉमिक कैलेंडर के लिहाज से कब आके भरेगा। रेगुलर ट्रेडिंग आवर खोलो, उसमें देखो कि कौन सी इनएफिशिएंसीज हैं जो कि मॉर्निंग सेशन में टैप हो सकती हैं। तो जितना एक मार्केट को देखते रहोगे सेम कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी और लॉजिक के साथ, उतना तुम्हारा एक्सपीरियंस बनता रहेगा और उतने तुम बेहतर होते रहोगे। 1050. So I wanted to sweep the high now.
It's the start of macro now. Right, maybe find support in this fair value gap and provide some discount in the initial stages of macro. But the price action seems to be slowing down, to be honest, and knowing that it's a bank holiday, maybe that was all for the day. You never know. 298.50 low. Yeah, what about that? Should I trail my stop to there? Just want to give it some room. Got this small inefficiency, and that can be used as a stop run as well. I get to close above or inside this volume imbalance. It did not. Looking weak. It can, but if you see that the discount wick we have marked uh, has been already swept, so that is why I'm not taking it as a premium array. I am rather taking it as a discount array. And knowing that these highs are there, similar on ES as well, I am reading them as a draw on liquidity. Also, if I show you this, you see midnight open price is sitting there. Very nice 15-minute CB. So all I wanted to know, like this much strength, and I'm pretty sure that it is going higher, and whether we are placed in a way where we can cash out on that opportunity is a different thing.
but yeah, it can even retest the 930 open price again. It did it here. I respected it bullishly. So just going to stick with the information being provided with the by the market up till now. So currently reading this as the inversion. Yeah, equal highs must like should be taken from here. If not, then it's okay. Typical Monday for me, just like usual. And especially it was a bank holiday. I think I should have not risked two elements, like complete three elements, but it's okay. At the end of the day, it's an evaluation account. So up till now, that CB is being respected bearishly. That is our silver bullet. Okay, Veliga. Retested that. But if because we are also approaching, lunch hour, we can see the drop and retracement of this range as well. Okay, it came off 50%, so that is fair enough. All right, I think lunch should continue higher then. देखते हैं जी, देखते हैं, सब्र करते हैं क्या होता है. Oh, we have already been live for more than 90 minutes. If you guys are liking and learning anything, please give it a like. And if you trade NASDAQ or use ICT concepts to read price action, I'm live here every day. So do give channel a subscribe as well so that you never miss a stream. We have also got free Discord server, mainly focused on ICT learning and announcement of these streams and results. So if that is what you are looking for, you can find the link in the description. And good close there. 11 o'clock open, new hourly candle opens. Let's look at what is being given to us on hourly candle. We are inside this SIBI.
should retest the silver bullet and continue the run higher. I won't call high resistance liquidity run, but it's just that the price action is really slow and choppy. What you can do in these circumstances is use wider stop loss. As you can see, the VIX can do the damage. And stick to your bias for longer time because you know that it's a bank holiday and it might take um, much longer than usual. Maybe reduce your targets as well, and that is why I increased my partial on the second TP. So yeah, like read what the market is providing you and then expect like manage your expectation and play accordingly. You see back and forth, back and forth. So you can expect these kind of conditions uh, on a day like this. So what I'll do basically is even remove that and start applying what I am preaching here. I'm going to reduce that to New York morning high. We'll be booking somewhere around 200, which is my one risk element. So one loss will be covered there, and maybe we can even make something today if we are filled on that target as well. You see? Da-da-da-da-da. I came at 24,343. भाई और कितना जल्दी निकलूं? ये इक्वल हाइस तो टारगेट करने ही थे ना, उससे भी नीचे कर लिया, बॉडीज में कर लिया उसका टारगेट, क्या करूं? मिल गया, सब्र करना पड़ेगा। तुम लोगों को पता नहीं क्या चाहिए, ये गोल्ड लेना तुम लोगों के दिमाग खराब कर दिए हैं। और ये एनक्यू भी देखना, जब वॉलेटिलिटी होगी तो फिर भाग रहे होगे इधर से उधर। सो still in $140 realized loss. So, yep. अब ये बोलोगे कि नीचे क्यों किया, वो प्राइस तो पहुंच गई उधर। ऊपर ही रखते तो $50 ज्यादा बना लेते। भाई खुदा तो ही नहीं हूँ, गैब का इल्म तो ही नहीं है मुझे यार। Mohammed, where are you from, bro? And what do you trade? What do you use to read price action?
Looks like you are one of ICT student as well. You mentioned high resistance liquidity, right? And someone who knows what he's talking about, which is very rare. Not really very rare, but yeah, rare. ये दिल भाई इजाजत हो तो दो कर दूं इसको, एक राइट करें अगले 24 मिनट तक। Only NQ, that's nice. Would love to know you, bro. Um, like if you can join the server or wherever you wanna. Liquidity sweep. Am I missing something? Even five, we are placed below the 5 minute inefficiency. We are placed below opening range gap top 19th of December. I think we should be fine. Should I book two here and leave one at one where it is? Let's wait. It can retrace to this level. We've got 2 minutes in the macro, so last 2 minutes can bring it back into some discount level, and the rest of the lunch session can continue higher. Oh, thank you, bro. Thank you for being here. And yeah, would love to know you. Stay safe and maybe see you tomorrow over the stream here. Same timing, 9:30 a.m. Eastern Standard Time. नहीं कर रहे हैं दिल भाई, कर लेते हैं यार, छोड़ो। क्या हो गया? क्या ही फर्क है? So I'm trailing my stop to break even though. दोस्त चला गया तुम्हारा, मेरे ख्याल से तभी भी कुछ हो गया हमारा काम, वरना कुछ हो नहीं रहा था जब तक होता है यहाँ पे। मजाक कर रहे हैं, but good to know uh, that new people are coming in and we'll build this community up from here. फिर बोलोगे हॉलिडे है। अबे भाई, क्योंकि हमें पता है ना सब रिपीट हो रहा है यार, हमें जिंदगी भर यही करना है। हमें आज या कल में पैसा बना के भाग नहीं जाना है इधर से। ये लोग ना, मजा आता है, हमें मजा आता है इसके बारे में पढ़ने में भी, ये करने में भी। तभी बैठे का 9 घंटे की जॉब करके आके, और कल भी जाना है, कितने देर में जाना है, बस अभी ये मैं 20 मिनट में बंद करूंगा और फिर उधर से मेरे पास 5 घंटे होंगे सोने का। थैंक यू वेरी मच, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट इज इट फॉर द डे, बैंक हॉलिडे। We are up $850 on these evaluation. 2,500 is the target. Going to take it really slow, not going to rush it. So, yeah. He. Let's read a little annotation chart. Sorry if this is, too much for someone here. अगर मैं वही ना, ये एनोटेशन सही तरीके से मैं ना नोटिस नहीं कर पाता हूँ 1 मिनट पे ये देखते हुए। ये न्यू वीक ओपनिंग गैप के लो पे कितना अच्छा बाय है। ये ब्रेकर इसने यूज़ किया है, ये ब्रेकर इसने यूज़ किया है।
तो है either cleaner charts or either this. और आप ये भी देखो कि मैंने कब बोला था कि ये फिल हो जाना चाहिए मैक्रो में ना। अभी टाइम क्या हुआ है 11:10। मैक्रो कब होता है 10:50 शुरू होता है। तो मैक्रोस को हमेशा इस तरीके से करके पढ़ा करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से शुरू हुआ था मैक्रो, ठीक है, और मैक्रो ख़त्म हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। भाई बोल लेते छुट्टी का दिन है, आईसीटी काम नहीं करेगा। हम टाइम के भी साथ बता रहे हैं कि कब होगा, अगर स्टॉप आउट होगा कब होगा, अगर टारगेट होगा। तो इस तरीके से अगर पढ़ रहे हो ना मैक्रोस को, तो काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि अगर इसको ये लिक्विडिटी अटैक करनी थी तो यहाँ पे था। जब मैक्रो शुरू हुआ तो पहले उसने थोड़ा सा डिस्काउंट में किया, उसने लॉन्ग ऑर्डर्स बुक किए और ताकि रेंज बढ़ जाए इसके टारगेट तक की, और फिर वो वहाँ से बुम 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 बुम। तो मैक्रो बहुत ज़रूरी है। This is how the daily chart is looking like. Looks like ES is going to find some sort of support in this volume imbalance. इन क्यू का ये लग रहा है कि इसकी बॉडी में कहीं वो है। दिल पे मतलब नहीं यार, दिल पे क्यों देंगे यार, दिल पे क्यों देंगे। अच्छा अच्छा चल रहा है सब कुछ। गुड डे। मंडे के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा दिन था मेरा, टू बी ऑनेस्ट। तो रिएक्शंस देख रहे हो ना आदिल भाई, सारी उस पे एनोटेशंस पे। तो कभी कभी ये एनोटेशन के चार्ट बनाने से फ़ायदा क्या हो जाता है कि आपको, ठीक है, अगर डेली डायरेक्शन नहीं पता, बायस नहीं पता, वो आपको चाहिए नहीं। आप इधर से अगर स्ट्रॉन्ग वो देख रहे हो, स्पेशली आफ्टर द स्वीप ऑफ द लो ऑफ ओवरनाइट सेशन, और फिर आप ये देख रहे हो कि इसको भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, तो तुम इधर से लॉन्ग करके इसके मिड पॉइंट तक उतार लो। तो ये एनोटेशंस ना शुरू शुरू में मुझे तो बहुत काम आती थी, तुम देखना यूज़ करके, आई एम प्रेटी श्योर बहुत काम आएंगी। और मिडनाइट ओपन प्राइस का बता रहे थे, काफ़ी अच्छी जगह पे बैठी हुई है, अबाउट टू ड्रॉ इनटू दैट। गार्डन गार्डन सीन्स क्यों मेरा भाई, उस पे नहीं रहा करो, मेक इट बोरिंग, जितना बोरिंग होगा ना यकीन मानो उतना पैसा बनेगा। ये 5th जैन का हाई पहले स्वीप नहीं हुआ, 5th जैन का हाई पहले स्वीप नहीं हुआ, तो हम 19 जैन में 5th जैन का हाई कहाँ पड़े तो। ये रहा 5th जैन, नहीं 5th जैन ये रहा, नहीं ये रहा 5th जैन। इसके तो हाई को तो भाई बेड़ा गर्क किया हुआ मार्केट ने, इसके के हाई को। ये ना क्या चाहते हो,
So about to trade to lower quadrant of the opening range gap from today. Thirteen minutes in lunch hour to start. अदील कोई सवाल वगैरह हो तो पूछ लो यार, आखिरी 13 मिनट है फिर ऑफ करेंगे क्योंकि आज फ़ायदा नहीं है ज़्यादा रुकने का नहीं है. If anyone else has any questions or want to know about anything, do let me know. And drawings, remove drawings. Let's get our charts cleaner back again. 15, 15 and hourly. हाँ तुम्हारे वो 5th Gen वाला समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहे हो तुम? अगर तुम रिपीट कर लो या समझ में आ गया. Let's review our executions at least. Okay, so initially went short above this first presented fair value gap. It was an emotional trade. Totally forgot about our draw on liquidity, which was mainly this, or at least that. Ended up getting stopped out for $180. Then went long in extreme premium. Should have waited for it to retrace into some decent range, which was 50%, as you can see here. From 50% it was back into the fair value to continue it higher into decent, take those highs and into a decent inefficiency there. So it was not really a bad day to be honest, but it was a slow day as price action is, compared. And Monday usually traps, me at least like that, and Tuesday as well, like on a lesser basis, but Monday is really bad for me. So, yep, ended up making 168 for the day. So pretty happy with that on both the evaluations. Just taking really slow in January and waiting on more information so that we can take it slow and capitalize on better price action, maybe moving into later Feb and March, where I am mainly planning to execute on a much larger scale.
reacting of that inefficiency. Maybe wants to retest that busy. Retesting that inefficiency that we marked a minute earlier. Yes, boss. Pretty good session. Ended up making something back. Was pretty, tried my best to be on the safe side. And maybe that is why that loss is what I'm a bit, you know, holding myself at, because that wasn't me, to be honest. It was just a rush trade. And I do end up. So what happens with me with the inversion fair value gap is I never wait for them to invert. Like as soon as it will get in there, I will long it, ignoring the time that the morning range has just finished. So it will refer the morning range, and it has swept some, stops here. So it is reasonable for it to expect some retracement. And then the retracement was perfectly at 50%. And this was a really strong buy using this fair value gap, using this as a stop. So yeah, fair enough session for bank holiday Monday. All right, last 5 minutes here. All right, use that inefficiency to run prices further lower. And this inefficiency. And mainly selling off from this London inefficiency right from the midpoint. Bodies respecting the midpoint. Very little coloring outside the box there. No, look at this. Random, very random thing. Very, very random thing. Something I mentioned when the price was here. Midnight open price. Very random. And ICT doesn't work.
3 minutes away from lunch open. He is taking a good slap as well from that 15 minute. Trapping the longs who never took the profits. So, and now as lunch is kicking in, maybe you can expect a reversal of all of this, because I'm not expecting it to trade inside this gap yet. On the daily chart, I think we have got a lot of sell side damage still to be done. Maybe not today, but who knows? Equal lose. This one can be the target. Retail diagonal resistance have been respected previously 3 times. Very strong support now. The price is just going to boom from here, you know. Boom. You can long here, and then you can take your stop loss here. Indeed. Something that finally makes sense to you, Ali, right? Let's roll that again. अभी देखना डील होगा क्या इसके साथ। बस तुम्हारे लिए रुक रहा हूँ मैं, रुकना चाहिए नहीं मुझे। अगर ये हो जाता है अगले 3 मिनट में तो रुकूंगा, वरना नहीं। 11:35। बॉस आई प्रॉमिस, मतलब पैसे की प्रॉमिस नहीं है, बट यू विल लर्न अ लॉट from these sessions. Just try to build consistency in one market with one concepts, and I'm pretty sure you will be there. Okay, stick with that. All right, guys, I'm done for the day. Got work in the morning, so this will be it. Yes, bro, मतलब मैं वो मजाक कर रहा था जो रिटेल के, हम लोग रिटेल के कॉन्सेप्ट्स को टारगेट करते हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि ये इनएफिशिएंसी भर के इसको नीचे ही गिरना चाहिए, और वो जो डायगोनल वो बनाई थी इट विल वॉयलेट इट। सो yep,
that will be it, guys. Thank you so much for being here. If you learned anything, drop a like. And if you trade NASDAQ or ICT, I am live here every trading day at 9:30 a.m. Eastern Standard Time. So subscribe the channel and I'll catch you guys tomorrow at 9:30. Until then, take care, stay safe. Cheers.